से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। सत्यतापूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करती हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करती हूँ। खूब खूब धन्यवाद सम्यका जी आपका। और भाई और बहनों, आपका सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं अपने मित्र वज्रशूरा का करता हूँ। कल मैंने बताया था कि वज्रशूरा ये आयरलैंड से ही है और वहीं उनकी पढ़ाई भी हुई, वहीं उनके माता पिता भी रहे और वहीं पर वो संघ के संपर्क में भी आए। और संघ के संपर्क में आने के बाद जब उनके सिलसिला शुरुआत हुआ शिविरों का, तभी हमारी मुलाकात हुई, जहाँ मैं रहता था कुछ समय के लिए पद्मलोक में। तो मैंने देखा कि वो काफी सीधे सीधे धम्म में रुचि लेने वाले और उसको समझने के लिए अपना समय देने वाले, और उस वजह से उनका जो नियमित आना जाना रहा, तो उस वजह से वो पद्मलोक में एक तरीके से मेरे हरदम के मिलने वाले मित्र बन गए। और देखा जब मैं वहां से आया उसके बाद से वो आयरलैंड का जो केंद्र है हमारा डबलिन में, उसके चेयरमैन बने, फिर उसके मित्र कन्वेनर बने। ऐसे अलग अलग जिम्मेदारियों में उन्होंने अपना योगदान निभाया और ऐसे ही धीरे धीरे वो फिर प्राइवेट प्रिसेप्टर बने, फिर पब्लिक प्रिसेप्टर बने और अब वो बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे। तो इन जिम्मेदारियों के साथ साथ उनकी अपनी धम्म के प्रति की गहराई और हमारी मित्रता ये बहुत अच्छे से बढ़ते गई और भारतीय संघ में भी बड़ा अच्छा रुझान रखते हो, अपना समय देते हैं, समय मित्रों के साथ में बिताते हैं। और कल देखा होगा आपने, उन्होंने बुद्ध वज्र का भी नाम जिक्र किया था। तो उनकी मित्रता बड़ी अच्छी है मित्रों के साथ में, भारतीय लोगों के साथ में। इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है और ऐसे मित्र हमारे साथ आज यहाँ मौजूद है, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ और उनसे आप सभी की तरफ से विनती करता हूँ कि वे अपने प्रवचन की शुरुआत करें। थैंक यू। So just a brief your introduction, and then I requested from behalf of all my friends about your talk. So please start your talk. Great. Thank you, Nagamitra. Hello, brothers and sisters. Jai Bim, Namo Buddhai. So, very good to be with you again in India. तो मुझे बहुत खुशी हो गई कि आज पुनः आप लोगों के साथ में भारत के इस में शामिल होके। I'm here in the Dublin Buddhist Centre in Ireland, so this is one of our shrine rooms and the shrine behind me. तो मैं डबलिन में जो आयरलैंड में है वहाँ के जो केंद्र है उस केंद्र के एक पूजा स्थान में बैठा हूँ जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। But I would love to be there with you in India as well. I've been there twice and it's been wonderful. मुझे आपके साथ में आना बहुत अच्छा लगता है। इसके पहले भी मैं 2 बार आ चुका हूँ भारत में। Such wonderful hospitality from my brothers and sisters in the Dhamma in India. तो मेरे जो धम्म भाइयों बहन है भारत में, उनकी जो मेहमान नवाजी होती है वो वाकई में बहुत सराहनीय होती है। Particularly for the order conventions in Bodh Gaya twice. और खासकर जो हमारी धम्मचारियों की जो परिषद होती है उस दरमियान इसको बहुत करीब से देखने का मौका मिला। So I don't know how many were here yesterday, but I'll do a short recap of yesterday. मुझे पता नहीं कल आप में से कितने लोग उपस्थित थे, मगर कल मैंने जो कुछ भी बोला उसको थोड़ा पुनः दोहराऊंगा मैं आपके सामने। So yesterday I introduced the Buddha's teaching of the Noble Eightfold Path. तो कल मैंने बुद्ध की जो आर्य अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा है उसको प्रस्तुत किया था। It was one of the first teachings the Buddha gave to his disciples after enlightenment. बुद्धत्व प्राप्ति के बाद में बुद्ध ने ये पहली शिक्षा अपने शिष्यों को दी थी। It's of central importance to the Dhamma. और धम्म जो पूरी शिक्षा है उसमें ये बहुत मध्य भाग में है। And I talked about how it can be divided into the path of vision and the path of transformation.
और मैंने उसको कैसे दर्शन मार्ग में और भावना मार्ग में कैसे विभाजन होता है उसके बारे में बताया. So the path of vision is the first step, perfect vision. तो जो दृष्टि मार्ग है वो पहला सम्यक दृष्टि का अंग है. So this is where we have a vision of something. We see the Buddha, we see the Dhamma more clearly. तो ये एक ऐसा अंग है जिस माध्यम से हम बुद्ध और धम्म को बहुत ही साफ सुथरे ढंग से देखते हैं. It might happen at various times in our life when things are difficult or when we're very inspired. तो ये तभी बहुत आसानी से होता है जब हमारे जीवन में बड़े कठिनाई के दौर होते हैं और हम कुछ ऐसे परेशानियों से गुजरते होते हैं. And at times like this, we put our hands together and say, Buddhang Saranang Gacchami. और जब ऐसी परिस्थितियां आती है तो हमारे हाथ स्वाभाविकता जुड़ जाते हैं और हम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि दोहराते हैं. So we see things more clearly, and that is the vision. तो जब हम बहुत अच्छे से साफ सुथरा देखते हैं उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा सम्यक दृष्टि का अंग है. And we've all had some degree of that in our lives, or we wouldn't be here today. और कुछ अंश में हम सभी के पास में ये सम्यक दृष्टि का होता है, उसी वजह से आज हम ये झूम के माध्यम से इकट्ठा हुए हैं. And as we keep practicing the Dhamma, we'll keep having more moments of perfect vision. और अगर हम इसी तरीके से अपना आचरण करते रहेंगे तो ये सम्यक दृष्टि और भी हमको स्पष्ट होते चले रहेंगे. But in a way, vision is easy. मगर एक तरह से देखें तो जो दृष्टि है वो बहुत आसान दिखती है. The real challenge then lies in the next part of the Noble Eightfold Path, the path of transformation. मगर हमारे सामने चुनौतियां तब खड़ी होती जब हम आगे अपना जो परिवर्तन का मार्ग अपनाते हैं तब. This is where we have to bring the vision that we've had down into the rest of our lives and into all aspects of our lives. जब हमको सम्यक दृष्टि का एहसास होता तो वो एहसास सभी अंगों में जीवन के हर पहलू में जब लाना हो तब वो हम शुरू करते हैं. Sometimes our vision is up here and our lives are down here. तो कई बार मतलब जो हमारी दृष्टि होती थोड़ी ऊपर होती है और हमारा जो जीवन स्तर होता है वो नीचे होता है. And we have to bring our life up to the level of our vision. और कई बार हमको हमारा जो जीवन स्तर है हमारे दृष्टि के बराबर लाना होता है. So the path of transformation requires a lot of work and effort. तो जो परिवर्तन का मार्ग है उसके लिए बहुत ज्यादा शक्ति लगाने की जरूरत होती, बहुत हमको मेहनत करनी पड़ती है. And yesterday we saw that the first place it begins is with our hearts and our emotions. और कल हमने देखे थे हमारे मन के माध्यम से कैसे इन चीजों को परिवर्तन में लाना. So we have to transform our heart, we have to transform our emotions. तो हमको हमारी भावनाएं, हमारा मन परिवर्तन करना बहुत जरूरी है. And this is the next step, the second step of the Noble Eightfold Path, perfect emotion. और वो आर्य अष्टांगिक मार्ग का दूसरा अंग है. Just a minute, one minute please. Yeah, that's okay. अरे मेरा प्रवचन चल रहा है. हाँ सर, हम कर लिया. हाँ sure. बता दो भाई. हाँ. That's all right. Yeah. That's okay. Yeah. So we have to, the second stage of the Noble Eightfold Path then is perfect emotion. That's where we start the transformation. और वही परिवर्तन का जो दूसरा अंग है हमारा सम्यक संकल्प का, वो हमको करना बहुत जरूरी होता है. And we talked yesterday about moving away from unhelpful emotions. और कल हमने बात कर चुके हैं कि जो हमारी जो अविधायक ऐसी भावनाएं उससे परे जाना. And moving towards emotions such as metta, dana, karuna, upeksha, so on. और फिर हमारी जो भावनाएं हमको परिवर्तित करना है मैत्री, दान, मुदिता, उपेक्षा इनकी तरफ. Good. And that's the start of the path of transformation. और वो परिवर्तन का एक शुरुआत है उस मार्ग पर आरूढ़ होने की. So today I want to move on to the next 3 steps of the Noble Eightfold Path. और आज मैं 3 उन अंगों की तरफ बढ़ना चाहता हूँ.
So they are perfect speech, perfect action, and perfect livelihood. वो है सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका. Great. So we'll start with perfect speech. तो हम शुरुआत करते हैं सम्यक वाणी से. So it's not enough, even though it's important, it's not enough to transform just our inner lives. तो ये उतना ही पर्याप्त नहीं कि हम आंतरिक अपने जीवन में परिवर्तन करें. We also have to speak. We also have to communicate with other people. हमको हमारी वाणी में परिवर्तन लाना, लोगों से बात करते हुए परिवर्तन लाना भी बहुत जरूरी है. And we communicate with other people in so many ways. और हमें बहुत सारे तरीकों से लोगों से संपर्क साधना आवश्यक होता है. So when we talk about perfect speech, we don't just mean literally the speech that comes out of our mouth. तो हम जो सम्यक वाणी की बात कर रहे हैं उसका ये मायना नहीं है कि केवल हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं वो हम परिवर्तित करें. So that would include WhatsApp messages. उसका हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे व्हाट्सएप मैसेज कैसे हो रहे हैं. Facebook, email, all ways we communicate. जो भी हमारे साधन है संपर्क के, उन सारे साधनों का जिक्र इसमें कर सकते हैं. Even our body language. हमारी जो शरीर की जो अपनी तरीके हमारे हाव भाव के उसके भी माध्यम से. So when we say perfect speech, we mean all forms of communication. तो जब हम सम्यक वाणी की बात करते हैं तो जिससे भी हमारा संपर्क करना हो वो सारे अंगों का उसमें इस्तेमाल होता है. But speech is very important itself, like verbal speech. मगर जो हम अपनी वाणी से प्रस्तुत करते हैं वो भी बहुत मायना रखता है. It's speech is like, a thought that has come out. तो जो हमारे विचार होते हैं वो उन विचारों को प्रस्तुत करने का जो माध्यम है वो वाणी है. It's very easy, very fast, very sudden. ये बहुत आसान है, बहुत तेज रफ्तार है और बहुत प्रभावी है. It's very easy to cause harm by just speaking the wrong thing without thinking. बगैर सोचे समझे अपने शब्दों से किसी को तकलीफ देना बड़ा आसान है. And the Buddha said that when we speak badly, when we speak poorly, it's almost like we have when we speak badly, when we speak poorly. जब हम उसको बहुत गलत तरीके से या बहुत कम दर्जे के हिसाब से बात करते हैं. It's like we have an axe in our mouth. We're hitting someone with an axe. इसका मतलब है हमारे जुबान में एक तरीके की कोई ऐसी औजार पड़ा हुआ है जिससे हम कट करते हैं. And in the West, we have a saying, "Sticks and stones may break my bones." तो हमारे अंग्रेजी में एक कहावत है कि जो भी मतलब पत्थर हैं वो हमारी हड्डियों से तोड़े जा सकते हैं. But words can never harm me. मगर शब्द हमें कोई तकलीफ नहीं दे सकते हैं. But I don't think that's true. मगर मैं नहीं समझता हूँ कि वो सच है. So it can be very painful to be on the end of bad words. बुरे शब्दों के माध्यम से बहुत तकलीफ हो सकती है. So we need to be very careful with our speech. तो हमारी वाणी के लिए बहुत हमें जागरूक रहना चाहिए. Our speech is the first expression of our hearts. हमारे हृदय को अभिव्यक्त करने की वाणी ये एक महत्वपूर्ण माध्यम है. So in his lecture, I'm working with the lectures by Bhante Sangharakshita on the Noble Eightfold Path. तो बंते संघरक्षित जी ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग पर प्रवचन दिए, मैं उसका संदर्भ लेकर आप लोगों से बात कर रहा हूँ. And in that lecture, he calls it the ideal of human communication. और उस प्रवचन में वो कहते हैं कि संपर्क बहुत आदर्श है हमारे मानवीय समाज में. So perfect speech is how we ideally communicate. तो जो सम्यक वाणी है वो किस तरीके से आदर्शवत हो सकती है. And he talks about, Bhante talks about 4 levels of increasingly skillful speech.
और बनते जी 4 स्तर बताते फिर वाणी के. And the first level is the level of truthfulness. और वो पहला जो स्तर है वो है सत्यवाणी. So this is about being factually accurate. वो इसका मतलब है कि हमको जो वास्तविक स्थिति देखते हैं उसको वैसा ही प्रस्तुत करना. So I'm Irish and we love to exaggerate. तो मैं आयरिश हूँ और मुझे बड़ा चढ़ा के बातें करना अच्छा है हमारे इसमें. Maybe the Indians do too. Maybe we're similar in that regard. हो सकता है भारतीय भी वैसे ही हैं, तो हम एक दूसरे के साथ में समान हैं. So we have to be careful when on the Zoom call we don't tell people there was 200 people on it. तो हमको जूम में जितने लोग हैं उतना ही बताना चाहिए, ना कि हमने ये बताना चाहिए कि उसमें तो 200 से अधिक लोग थे. Because my ego would feel better if there was 200 people on it. मेरा अहंकार मुझे बहुत अच्छा महसूस होने देगा कि अरे यार 200 लोग थे. So we have to be careful to say things as they are. तो हमने ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है वैसा बोले. So not exaggerating firstly. तो हमने बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना है. The other area that I think is very good तो दूसरी एक हिस्सा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, is what we call in the West little white lies. तो जैसे हम उधर इंग्लैंड में या फिर उधर यूरोप में बोलते हैं कि छोटा मोटा झूठ चलता ही है. I'm not sure, Nagamitra, if you have an equivalent in Indian. Yeah, it is equivalent in India. Good. So these are little things we tell that aren't true just to make things easier. तो हम सर मतलब इस तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि चलता है छोटा मोटा झूठ, और फिर काम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. They're socially convenient. ये सामाजिक स्तर पे थोड़ा सा एक दूसरे के साथ में मिल बैठ के बात करने में आसान सी बात है. But I think it's a really interesting exercise to try out. मगर मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी एक ये हमारा तरीका हो सकता है और जिसको हमने उपयोग में लाना चाहिए. Just to try not saying any little white lies for 1 week. कोशिश करिए कि एक सप्ताह बिना किसी झूठ के, छोटे से भी झूठ के आप अपना आचरण करके देखिए. And I did this when I first came to the Dhamma. और मैंने किया है मैं जब धम्म के संपर्क में आया. And I found myself much more free and happy. और तब मैंने देखा कि मैं अपने आप को बड़ा आजाद और आनंदित महसूस किया. Because I didn't have to remember what little white lie I had said to that person and to that person and to that person. क्योंकि मुझे ये याद करने की जरूरत नहीं रही कि भाई मैंने उसके साथ में क्या झूठ बोला और उसके साथ में क्या छोटा झूठ बोला और उसके साथ में कौन सी बात याद रखनी है. And then I didn't have to worry about that person talking to that person and finding out I had lied. और फिर मुझे इस बात की भी चिंता नहीं करनी पड़ी कि मैंने उस आदमी को क्या बोला था और वो आदमी मेरे बारे में उसको क्या बता रहा है. So like so much of Buddhist practice, it makes us more free. तो ये सारी जो बुद्ध शिक्षा है वो हमको बहुत आजाद करती है. So try that out for yourself if you already tell little white lies. तो कोशिश करिए कि अगर आप छोटा मोटा झूठ बोलते हैं तो उसको ना बोले. Next, in terms of truthfulness, how do we speak the truth? तो फिर जो सत्यवाणी को लेकर हमने ये देखना चाहिए कि फिर हम सत्य कैसे बोलें. So to speak the truth, we need to know the truth inside. तो सत्य बोलने के पहले हमको भीतर से ही सत्य का एहसास होना चाहिए. We need to know our hearts and our minds. हमने अपने हृदय और मन को एक तरीके से पता होना चाहिए. And this is quite difficult to do. और ये बहुत मुश्किल है. To really fully know ourselves. अपने आप को उसमें पूरी तरह से समझना. Speak from that. और उसमें से बोलना. So Sangharakshita is very controversial and says we probably never speak the truth in some ways. और संघरक्षित जी थोड़ा विरोधाभासी ये बोलते हैं कि हम शायद ही कभी सच बोलते हैं. In some ways because we never fully know the truth inside. क्योंकि हमारे भीतर के अपने आप को हम बड़े मुश्किल से ही जान पाते हैं. But I think he's also trying to just provoke us into thinking more about it. मगर साथ ही साथ बड़े आजादी के साथ में और धैर्य के साथ में ये बात को वो प्रस्तुत भी करते हैं.
So when we need to be clear internally तो हमको भीतर से बहुत स्पष्ट होना चाहिए so that we can speak well. ताकि हम बहुत अच्छे से चीजों को देखें. Also, when we're being unethical, we will feel turmoil inside. और जब हम अपने आप में नैतिक नहीं होते तो अंदर में एक हलचल होती है. And it's very difficult then to speak the truth or to speak truthfully. और तब हमको सच बोलना बहुत मुश्किल होता है. Because we won't have a clear conscience. क्योंकि हमको बहुत स्पष्ट हमारी जो चेतना है वो समझती नहीं है. So one of the best ways to speak truthfully is to act ethically. तो सत्य बोलने के लिए हमको हमारे नैतिक आचरण को करना बहुत जरूरी है. And when we have a heavy conscience, और जब इस तरीके के भारी भरभक्कम हमारे इस जागृति का अगर एहसास रहा, talk to our spiritual friends and confess and clear that heavy conscience. और जब इस तरीके का भारी भरभक्कम कोई बोझा हम पर लगता हो तो अपने दोस्तों से, अपने कल्याण मित्र से बात करिए. And then our speech will be much more like perfect speech. और फिर हमारी जो वाणी है वो सम्यक वाणी होते चली जाएगी. Often our speech is with people. Often our speech is about trying to get people to do something for us. और कई बार मतलब हमारे वाणी का उपयोग ये भी होता है कि हम किसी को हमारे लिए कुछ करवाना चाहते हैं. We can be trying to manipulate people. कई बार हम लोगों को एक तरीके से अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं. So with perfect speech, with truthfulness, we're trying to let go of doing that and just be truthful. तो इस तरीके की बातों को हमने छोड़ देना चाहिए और वाकई में जो सच है उसको प्रस्तुत करना चाहिए. And it's such a relief to speak the truth. और जब हम सच बोलते हैं तो एक तरीके का बड़ी सहजता का अनुभव होता है. We all want to speak the truth. हम सारे सच बोलना चाहते हैं. Often we're afraid that if we speak the truth, people won't like us. और कई बार ये होता है कि जब हम सच बोलते हैं तो हमको एक एहसास होता है कि लोग हमको पसंद नहीं करेंगे. But that's not my experience in the Sangha. मगर ये संघ में पूरे मेरा ऐसा अनुभव नहीं है. People have said to me, mitras have said to me, you won't like me if I tell you this. मित्र मुझे कहते हैं, धर्मचारी मुझे कहते हैं कि जब मैं ऐसा बोलूं आप मुझे पसंद नहीं करेंगे. But I've never been shocked, or I've never been too shocked. मगर मैं किसी भी तरीके से लोगों को उस तरीके से दुखी नहीं किया या उनको अपने संपर्क से बंद नहीं किया. It's always bigger in their minds than it is in reality. तो ये उनके अपने मन के बजाय वो सच को मैंने देखा. So be open with your Dhamma friends, with your Sangha friends. तो आप अपने दोस्तों के साथ में जो धम्मा में रुचि रखते हैं उनके साथ में ऐसा बोलिए. So that's the level of truthfulness. तो वो सच वाणी का स्तर है. The next level, the higher level, is the level of metta or affection. तो ये दूसरा जो स्तर है जो थोड़ा ऊंचाई की तरफ लेके जाता है वो प्रिय वाणी का है. So this really means taking in the person, deeply taking in the person. इसका मतलब है जो सामने वाला व्यक्ति है उसको बड़े गहराई से लेना. When we really take in someone and see them as a person, जब हम उनको समझते हैं और उसको एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, it's a lot easier to feel love for them. तब हमको उनके प्रति मैत्री का एहसास करने के लिए बड़ी आसानी होती है. Nagamitra, is my internet okay? Yes. Okay. Is that okay from my side? Yeah. Yeah, good. So often when we meet people, we have an idea about them. तो जब हम लोगों को मिलते हैं तो लोगों के बारे में हमारी अपनी सोच होती है. And we relate to that idea rather than the person. तो हम उन कल्पनाओं या उस सोच के साथ में उन व्यक्ति को देखते बशर्ते उस व्यक्ति को जैसा है वैसा देखें. And we do this with our
brothers and sisters, our parents, our husbands and wives. ये सभी हम अपने भाई बहनों के साथ, अपने पति पत्नियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ करते हैं. And misunderstandings and disharmony arises. और फिर हमारे बीच में गलतफहमियां और फिर वाद विवाद बढ़ते हैं. So we really need to let go of our ideas of people. तो हमने उनके प्रति की जो सोच है उसको हमने अपने मन से निकालना चाहिए. And just try and take them in almost like a new person. और एक तरीके से वो एक व्यक्ति है और वो एक नया व्यक्ति है, उस तरीके से उनको स्वीकार करना चाहिए. And when we do that, it's easier to love them then. और जब ऐसा करते हैं तो उनको हम अपने मैत्री के प्रभाव में ले सकते हैं. And then we will speak with affection, speak with metta. और तब हम उनके साथ में मधुर वाणी से बात कर सकते हैं, प्रिय वाणी से बात कर सकते हैं. And of course, we need to do the metta bhavana. और निश्चित ही हमको मैत्री भावना ध्यान साधना करना जरूरी है. And if someone is difficult, put them in your metta bhavana. और जब आपको ऐसा कोई कठिन आदमी लगता है, मुश्किल आदमी लगता है, उसको अपने मैत्री भावना में शामिल करिए. And then when we speak to them, we might be surprised by how much metta we feel. और जब हम उस आदमी से बात करेंगे, तब आप देखेंगे कि कितनी मैत्री हमारे पास में उनके प्रति है. It's very easy to forget to put your enemy in the metta bhavana. ये बहुत आसानी से हम अपने जो दुश्मन को मैत्री भावना में लेना आसानी से भूल जाते हैं. But it's very important. मगर वो बहुत मायने रखता है. So that's the level of affectionateness or metta in speech. वो हमारे प्रिय बोलने का जो स्तर है वो है. The next level, again, the higher level, is the level of speech that is helpful. और उसके भी थोड़ा ऊपर जाके जो वाणी का स्तर आता है वो है हमारी वाणी जो है उपयोग में आने वाली होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए. And ultimately, what is helpful और अर्थपूर्ण क्या है? is speech that helps people grow and develop as individuals. तो वो वाणी से लोगों को मौका मिलना चाहिए, मदद मिलना चाहिए अपने जीवन में विकास करें. So in the Buddhist tradition, there's a lot of rejoicing in merits. तो बुद्ध की शिक्षा में बहुत पुण्यानुमोदन की बातों का उल्लेख है. So the story from the Buddha in the Parinibbana Sutta. तो ये परिनिब्बान सुत्ता में की एक कहानी है. The Buddha rejoices in Ananda in front of everyone for a long period of time. तो बुद्ध सभी के सामने आनंद की प्रशंसा करते हैं. And it's a very beautiful rejoicing. और ये बहुत खूबसूरती से उनका पुण्यानुमोदन करते हैं. And that is very helpful to Ananda. और वो आनंद के लिए भी बहुत मददगार होता है. So our Sangha should always have lots of rejoicing in it. तो हमारे संघ में हमने बहुत एक दूसरे का पुण्यानुमोदन करना चाहिए. And it's very, very helpful to help people grow. और हमको इस तरीके से लोगों में उनका विकास हो, ये ऐसा करना बहुत आवश्यक है. And so many of us can come to the Dhamma with low confidence. और जब हम लोग बहुत सारे जो यहाँ है वो जब संघ के संपर्क में आते हैं तो हमारा जो आत्मविश्वास है बहुत कमजोर होता है. And our friends give us confidence by rejoicing in us and helping us. और हमारे जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, वो हमको इस तरीके का आत्मविश्वास देते हैं. So not just focusing on the negative. हमने केवल किसी के नकारात्मक बातों पर ही लक्ष्य केंद्रित नहीं करना चाहिए. We can also help people, obviously, by Dhamma teaching. धम्म शिक्षा के माध्यम से भी लोगों को मदद करना चाहिए. But I think what people need even more is just first of all, तो मगर लोगों को क्या चाहिए? सबसे पहले लोगों को एक एहसास होना चाहिए. just to be seen and taken in a friendly way. तो वो एहसास हमारे दोस्ताना उनको स्वागत करते हुए महसूस होना चाहिए. And then we can teach the Dhamma. और फिर उसके बाद उन्हें धम्म बता सकते हैं या पढ़ा सकते हैं. So sometimes we do have to be critical.
कभी कभी हमने उनको टिकाए भी करना चाहिए. Sometimes we do have to tell people feedback. और कभी कभी उनको हमने एक थोड़ा सा उनके काम को लेकर कुछ मार्गदर्शन भी करना चाहिए. And the Buddha's criteria for this was और बुद्ध की जो पद्धति थी इस तरीकों को लेकर, is it true? क्या वो सच है? So sometimes maybe we need to check with our friends, is what we think true? तो कई बार जो सोचते हैं हम अपने मित्रों से जांच लेना चाहिए कि क्या ये सच है. Before saying it to the person. जब वो उस समय हमने जांचना चाहिए जब हम लोगों को बात करते हैं उसके पहले. Secondly, is it helpful to the person to hear that? और जब मैं सुनते हैं उनको तो क्या वो उसके लिए उपयोगी साबित होगा, मददगार साबित होगा. So for example, sometimes feedback will help people become better people. तो कई बार लोगों को उस तरीके से जो उनके कार्यों की जो टिप्पणी करनी है उससे मदद भी होती है. But sometimes it might lessen people's confidence. मगर कई बार ऐसा होता है कि लोगों का जो आत्मविश्वास है उस तरीके के उनको दी हुई सूचनाओं से कम भी होता है. And if it's going to lessen people's confidence, it's not helpful. और जब हम किसी को इस तरीके से उनके काम की जो आलोचना करते हैं या उसको जो कुछ भी हमारी टिप्पणियां देते हैं और उनका कॉन्फिडेंस कम होता है, आत्मविश्वास कम होता है, तो वो अच्छी बात नहीं. So if it is true and if it is helpful, अगर वो सच है और वो उनके उपयोग के लिए है या मदद करने के लिए है, then the Buddha said, do it at an appropriate time. तो फिर उसको एक उसके उचित समय पे उसको वो बात बताइए. So for example, don't do it in front of everyone else. तो उसमें से पहली बात है कि सभी के सामने उस तरीके का उसको बातें मत बोलो. Do it at a time where the most benefit will happen. तो वो समय देखिए जब उसको उस समय का उसको लाभ हो जाए. And the Buddha said, और बुद्ध फिर बताते हैं, it doesn't matter if the person wants to hear it or not. तो ये कोई मायना नहीं रखता कि वो आदमी सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता है. As long as it's true, helpful, and at an appropriate time, अगर वो बात सच है और उसके काम की है और उचित समय है, then it's appropriate. तो वो बहुत योग्य है. Okay, so that's truthful speech, meta speech, and helpful speech. तो वो ये हो गया, मतलब सत्यवाणी, मधुर वाणी और उपयोगी वाणी. Then the last level, the highest level of truthful speech, और फिर एकदम जो वाचा का जो उच्च स्तर है, according to Bhante Sangharakshita, भंते संगरक्षित जी के जरिए से, is silence. एक जिसको हम कहते हैं मौन रहना. So I will speak. मगर मैं बोलूंगा. So the Buddha was passionately a passionate lover of silence. तो बुद्ध खुद ही अपने आप में वो मौन को बहुत पसंद करते थे. So there are stories in the Pali Canon तो पाली ग्रंथों में कहानी आती है where the Buddha would send away monks to train more who weren't able to be silent enough. तो वो उनको ऐसे ही प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं कि जो लोग मौन नहीं भिक्षु रहते उनको जाके बताओ. So they trained until they could be more silent and then they came back. तो इस तरीके का प्रशिक्षण दो उनको, जब तक वो मौन का मायना नहीं समझते और अपने जीवन में उसका आचरण नहीं करते तब तक उनको उस तरीके का प्रशिक्षण दो और फिर आने दो. And there are beautiful stories of the Buddha and all his monks sitting in the jungle clearing. तो एक बहुत ऐसा उदाहरण भी है कि बुद्धा बहुत सारे भिक्षुओं के साथ में जंगल में मौन में बैठे थे. Hundreds of monks sitting in complete silence together.
तो कई जो भिक्षु थे वो शांत और मौन में बैठे थे, meditating through the full moon night. पूर्णिमा के अवसर पर वो शांति से बैठे थे deeply in harmony without any speech being needed. और बड़े गहराई से एकदम सुसंवादित के साथ में वो बैठे थे. So I find that a beautiful image of the Buddha by moonlight in the jungle. तो मुझे उसकी कल्पना करना कि बुद्ध जंगल में उस तरीके से शांति से उन भिक्षुओं के साथ में बैठे हुए. So silence is not just the absence of sound. तो मौन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आवाज नहीं रहना. Silence is a vibrant connection that we feel together. तो मौन मतलब एक तरीके की ऐसी जबरदस्त कंपन है जो हम महसूस करते हैं. Where there is so much harmony, we no longer need to speak. अगर हमारे आस-पास में जो लोग रहते हैं उनके साथ में अगर सुसंवाद बना है तो हमको बोलने की जरूरत नहीं है. It's hard to get silence in the world, in India or in the West. दुनिया में खासकर भारत और पश्चिम में भी मौन रहना बहुत मुश्किल है. But perhaps on retreat or from time to time we can try and have more silence. मगर शिविरों के दरमियान और कभी-कभार वक्त निकाल के हमने मौन का आचरण करना चाहिए. A positive, warm, rich silence. एक तरीके से हमने अपने भीतर में जो एक उस मौन के स्तर का अनुभव लेना चाहिए. Okay, so that's perfect speech. तो ये हो गया सम्यक वाणी. So next we'll move on to perfect action. तो फिर हम सम्यक कर्मांत की तरफ बढ़ते हैं. So I'll say a little less about this. तो मैं इसके बारे में बहुत कम बोलूंगा आपके सामने. But traditionally in the West, we have different reasons for being moral. मगर हमारे पश्चिम में कुछ अलग वजहों से भी हम अपने आप में नैतिकता का आचरण करते हैं. So I was born Catholic. तो मैं मेरा जो जन्म हुआ कैथोलिक क्रिश्चियन धर्म में हुआ. And for me as a child, why I was ethical was because of the authority of God. तो मैं अपने बचपन में क्यों इस तरीके से नैतिक था क्योंकि वहाँ एक तरीके का कोई ऊपर से आदेश था. उस आदेश की वजह से मैं नैतिक था. And if I was good, I would be rewarded, and if I was bad, I would be punished by God. अगर मैं बहुत अच्छा हूँ तो मुझे इनाम मिलेगा और अगर मैं बुरा बर्ताव करता हूँ तो मुझे भगवान सजा देगा. And I left that behind when I was 18. और ये सारी मतलब भ्रामक कल्पनाओं से जब मैं 18 साल का हुआ तब मैंने पीछे छोड़ दी. And I find Buddhist ethics now very different. और फिर उसके बाद मैंने जो बौद्ध नैतिकता है उसको बहुत भिन्न देखा. I don't know enough about Indian society to say if it's the same. मैं भारतीय परिस्थिति में कैसा है वो कहना मैं उचित नहीं समझता हूँ मेरे लिए. But I'm sure there are elements, I'm sure that authority plays a part, for example, in the caste system. मगर मैं ये तो निश्चित ही कहना चाहूँगा कि जो भी एक तरीके की दबाव और आदेश की परिस्थिति है वो तो होगी ही जैसे कि कास्ट सिस्टम से देखी जाती है. So Buddhism is very different. तो बुद्ध धर्म बहुत भिन्न है. There's also conventional ethics. और साथ ही साथ कुछ सामाजिक नीतिमत्ता है. And this is where you do something because everyone else does it. और इसलिए भी आप करते हैं क्योंकि समाज में सारे करते हैं. And I'm sure this is very strong in India, just as it is in the West. मुझे पूरा विश्वास है कि ये उसी तरीके का है जैसे भारत में और विदेश में भी. So in Ireland, we do things a certain way because everyone else does. तो हम आयरलैंड में ऐसा सोचते हैं और करते हैं क्योंकि सारे करते हैं. And that's just convention. और वो सामाजिक है. So, for example, with if you have a girlfriend, you can hold your hand walking down the street in Ireland.
तो अगर कोई आपकी महिला मित्र है तो उसका हाथ पकड़ के आप चल सकते हो, whereas in India you might not. मगर भारत में शायद ऐसा नहीं हो सकता है। And I remember being in India and being with my friend Buddha Vajra, जब मैं भारत में था और मेरे दोस्त बुद्ध वज्र के साथ में मैं था, and he would hold my hand walking down the street of Bodh Gaya. और वो मेरा हाथ पकड़ के बोध गया में चल रहा था। And that is very strange in Ireland. You wouldn't do that in Ireland. मगर आयरलैंड में आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत गलत माना जाएगा। It took me a bit of getting used to. और ऐसा करने के लिए मुझे थोड़ा समय बिताना पड़ा, But then I really enjoyed it. मगर उसके बाद मैं उसको अच्छा लगने लगा। So that's an example of different conventions. तो ये एक उदाहरण है अन्य अलग सामाजिक नीतिमत्ता के, And there's nothing particularly ethical about it. और इन बातों में कोई भी नीतिमत्ता नहीं होती है। So instead, the Buddha talked about our intention in our minds. तो बुद्ध जिस तरीके से अपने मन के परिवर्तन की बात करते हैं, अपने मन के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। So what makes an action ethically positive or negative तो हमारी जो कृति है वो किस तरीके से हमारी सकारात्मक होती है या नकारात्मक होती है, is not what an authority or society says. तो ये कोई भी हमको आधिकारिक रूप से या फिर समाज बताता है तो करने की जरूरत है, But it's what our intention is. तो इसमें हमारा मकसद होना चाहिए, हमारा उद्देश्य इस कृति के साथ होना चाहिए। If our intention, if our action is based upon greed, hatred, or delusion, अगर हमारी जो कृति है लोभ मोह द्वेष के मकसद से बुनी हुई है, then it is unskillful or unethical. तब मान लीजिए कि वो पूरी तरह से अनैतिक है और अकुशल है। And if it is based upon metta, awareness, wisdom, मगर हमारी मैत्री, प्रज्ञा और दान पर आधारित है, then it is skillful, then it is ethical. तब ये बहुत विधायक है और बहुत सकारात्मक है। So we need to know what's going on inside again. तो हमको भीतर ही झांकना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। The more clear and the more intelligent we can be about our hearts and minds, हम अपने स्वयं के मन के बारे में, अपने हृदय के बारे में स्पष्ट रूप से देखना चाहिए, the easier it is to see if our actions are ethical. तो बहुत आसान है हमको तब हमारी जो कृति है वो कैसी है उसको जानने के लिए। And I should say that this is all part of perfect ethics, perfect action. और मैं ऐसा देखता हूँ कि यही सम्यक कर्मांत है, सम्यक नैतिकता है, which is the next step of the Noble Eightfold Path. और ये आर्य अष्टांगिक मार्ग का अगला कदम है। So to quote Bhante Sangharakshita, तो संरक्षित जी क्या कहते हैं? the moral life becomes a question हमारी नैतिकता और जब प्रश्न उठता है of acting from what is best within us. तो हमारे भीतर में जो बेहतर है उसके माध्यम से जब काम करते हैं, acting from our deepest understanding, तो हमारे मन के गहराई के माध्यम से हम जब काम करते हैं, acting from our deepest understanding and insight, तब हम अपने स्वयं की प्रज्ञा और स्वयं की जो समझ है उसके माध्यम से कार्य करते हैं। our widest and most comprehensive love and compassion. तब हम एक तरीके से हमारे भीतर में जो करुणा है और मैत्री है उसकी अभिव्यक्ति के रूप में कार्य होता है। So acting from what is best in us. तो हमारे में जो बेहतर है उस माध्यम से काम करना। And this is difficult to do, so the Buddha gave us help. तो ये करना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ बुद्ध ने हमको मदद करी है। He gave us guidelines for how a Buddha would naturally behave. तो यहाँ हमको एक तरीके से मार्गदर्शक यादी उन्होंने दी है कि हम कैसे हमारे कार्य को सम्यक बनाएं। So a Buddha would naturally behave ethically.
तो बुद्धा पूरा पूरा एक यूं समझे कि नैसर्गिक रूप से वो अपना आचरण करते थे, or ways that look ethical to us. या फिर हम जिसको नैतिकता के रूप में देखते हैं, So we then copy that behavior. तो हम उनकी नकल कर सकते हैं. We try and act more like the Buddha. बुद्ध की तरह हम अपनी कृतियां करने की कोशिश कर सकते हैं. And so he gave us 5 guidelines or 5 silas. तो उन्होंने हमको 5 शीलों के रूप में मार्गदर्शक तत्व दिए. And also for Dharmacharis and Dharmacharinis, we have 10 silas. और धम्मचारी और धम्मचारिणियों के लिए उन्होंने 10 शील दिए. And we follow these not as rules, but as guidelines for how to live well. तो ये हम किसी भी तरीके से कोई नियमावली है करके आचरण नहीं करते, तो ये हमारे जीवन में मार्गदर्शक तत्व है. So the first precept or sila is not harming living beings or acting from metta instead. तो पहला शील है कि किसी भी जीव को हिंसा नहीं पहुंचाना, बशर्ते मैत्री से व्यवहार करना. So this is the first sila that we heard chanted earlier on. तो हमने शुरुआत में ये शील को उच्चारा है. So it's the most general precept or sila. तो ये बहुत सामान्य शील है हमारे लिए. It's how we need to act all the time. हमने हरदम किस तरीके से आचरण करना चाहिए. It means non-violence. इसका मतलब हिंसा नहीं करना. It means, for example, vegetarianism. इसका मतलब हम शाकाहारी बनना. It means not physically harming people. इसका मतलब हमने किसी भी तरीके से शारीरिक हिंसा नहीं करना. It means looking after our environment. इसका मतलब है हमने पर्यावरण का ख्याल रखना. And it means acting out of metta as much as possible. और इसका जितना हो सके मैत्री से व्यवहार करना. There's lots more that could be said, but I'll move on. तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, मैं अगर इतना ही कहूँगा. The second sila is to avoid taking the not given. और दूसरी शील वो बताते हैं कि जो आपको दिया गया नहीं है उसको नहीं लेना. Or on the positive side, to live from generosity as much as possible. और उसका विधायक शील है जितना दान दे सके उतना देने की कोशिश करना. So this means not stealing. तो इसका मतलब चोरी नहीं करना. But it also means not taking things that aren't already given to you. मगर इसका मतलब ये भी है कि जो चीजें आपको दी नहीं है उसको नहीं लेना. So if something isn't freely given to you, then it's not yours. जो आपको दिया नहीं गया है वो आपका नहीं है. So it might be in different situations like work. तो मान लीजिए कुछ परिस्थितियों में आपको काम है, where you can fudge things or blur things. या हो सकता है आप थोड़ा उसको धुंधला भी देखा जा सकता है उस शील को. And you help yourself to things in work. तो फिर आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं. So the Buddha is saying that we need to avoid this. तो बुद्ध कहते हैं कि इस परिस्थितियों को टालना चाहिए. Because doing that will affect our hearts and our minds. क्योंकि इस तरीके के कृति से हमारे मन पर असर होगा. And it's much better to have a clear, happy conscience. और हमको ये बहुत आवश्यक है कि हमारी जो मन है वो बहुत ही साफ हो. So try this yourself and see the effect. तो कोशिश करिए और फिर उसको देखिए कि कैसा असर होता है. And also dana, generosity is very enjoyable. और दान जो है वो बहुत ही हमको खुशी देने वाली कृति है. And when we think of dana, we don't just mean money or things. तो जब दान की बात आती है तो केवल पैसों के बारे में ही सोच नहीं सकते. It can be our time, our energy, our attention. तो ये हमारा समय है, हमारी क्षमता है, शक्ति है, या फिर हमारी कुछ अच्छी बातें हैं.
We saw yesterday that you can also give fearlessness, you can give life and limb. तो कल हमने देखे थे कि कैसे लोगों को अभय देना या अपने शरीर के अंगों को दान देना. And of course, the greatest gift is the gift of the Dhamma. और सबसे महत्वपूर्ण जो भेंट है या दान है वो है धम्म दान. So either we can teach ourselves or we can support others who teach. तो एक तो खुद आगे बढ़ के लोगों को सिखाना या जो सिखाने वाले हैं उनको मदद करना. So you have to be very nice to Nagamitra. तो आपको अच्छे होने चाहिए. Okay, and then the third sila is to avoid sexual misconduct. और तीसरी जो शील है लैंगिक दुराचार से दूर रहना. So traditionally the Buddha described this as avoiding rape, abduction, adultery. और बुद्ध मतलब शुरुआत में बताते कि बलात्कार है या अत्याचार करना है या किसी तरीके से लैंगिक दुराचार करना है. So any kind of violence. किसी भी तरीके की हिंसा. And again, we have to separate what's conventional from what's ethical here. और यहाँ पर भी थोड़ा हमको जो सामाजिक दृष्टि से क्या नैतिकता है उसको समझना जरूरी है. But it's very clear that rape, abduction, adultery are unethical. मगर जो बलात्कार है या जबरदस्ती करना है या किसी को बरगला के कुछ उनके साथ में करना है. But behaviors will be different in different places. तो ये जो हमारा जो बर्ताव है वो अलग जगह पर अलग-अलग हो सकता है. For example, I know that in Tibet, sometimes women marry more than one man. तो कई बार तिब्बत में ये देखा जाता है कि एक स्त्री कई पुरुषों से शादी करती है. And that's just convention. There's nothing unethical about that. तो वो एक सामाजिक है, उसमें कोई मतलब नीतिमत्ता होगी ऐसा जरूरी नहीं. So, but we have to be careful not to cause harm. तो उसमें मध्य बात ये है कि हमको ये ध्यान रखना है कि वो किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा है. And it's an area with a lot of emotion and craving. क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा इस तरीके की तृष्णा में शक्ति फंसी होती है. So we have to cultivate the positive side, which is stillness, simplicity, contentment. तो फिर हमने सादगी का जीवन, सीधा साधा जीवन, शांति का जीवन, ये सकारात्मक कृतियों को बढ़ाना चाहिए. So living as much as possible on non-craving. तो इसका मतलब है कि ऐसा जीवन जीना जो तृष्णा से परे हो. Trying to be content with what we have. जो भी चीजें है कोशिश करना है उसमें हम अपने आप को संतुष्ट महसूस कर सके. And trying to live simply and with great stillness. और साथ ही साथ बड़ा सादगी के साथ और शांति के साथ में जी सके. And being content with our wife or husband. तो हम पति पत्नी हो तो उनके साथ में हम संतुष्ट रहे. And if we need to change things, doing that on the basis of awareness and kindness. और हमको जब भी करना है तो एक तरीके से हमारे में मैत्री होना चाहिए और साथ ही साथ जागृति होनी चाहिए. Rather than craving or hatred. बशर्ते कि हमारे में कोई तृष्णा हो और द्वेष हो. So the fourth sila is to avoid false speech and to practice truthful speech. और जो चौथी शील है वो झूठ नहीं बोलना तो सच बोलना. So I've talked about this already a lot, so I'll leave that there. तो मैंने इसके पहले ही इस शील के बारे में बहुत कुछ बोल चुका हूं तो मैं उसको छोड़ दूंगा. The fifth precept or sila is to abstain from intoxicants. तो पांचवा जो शील है वो है नशे आने वाले पदार्थों से विरक्त रहना. So we don't drink alcohol or take drugs. तो हमने शराब या किसी भी तरीके से ऐसे कोई नशे के पदार्थों का सेवन नहीं करना है. So lots of people in Ireland drink alcohol. तो आयरलैंड में बहुत सारे लोग हैं जो शराब पीते हैं.
It's a bit different to India in that the majority of people drink alcohol, तो ये भारत से बहुत अलग है, but most people just have a small amounts here and there. मगर छोटे बहुत पैमाने में यहाँ वहाँ इस तरीके के लोग होते हैं. And maybe small amounts are okay, तो थोड़े बहुत पैमाने में ठीक है, but you have to be careful how you use anything that can be an intoxicant. मगर हमको ध्यान रखना है कि ये छोटी मोटी भी चीजें जो है वो कितनी हमको नशे में रत कराती है. Best to just avoid it. तो हमको उसको टालना ही है. And intoxicants, anything can be an intoxicant. कोई भी बात हमको नशा ला सकती है. Your phone can be an intoxicant. आपका मोबाइल फोन भी आपके नशे का कारण बन सकता है, where you can never put it down. जो कि आप कभी भी उसको अपने से अलग नहीं करते हो. You're always checking it for messages or Facebook or whatever. हर दम ही आप अपने मैसेज हो, फेसबुक हो, इनको चेक ही करते रहते हो. Shopping can be an intoxicant. फिर हमारी जो खरीदारी है, शॉपिंग करने जाना, वो एक नशा हो सकता है. Television can be an intoxicant. हमारा टेलीविजन देखना भी नशे का हिस्सा हो सकता है. News can be an intoxicant. खबरें हमारा नशे की कारण बन सकता है. So even bad news. बुरी खबरें भी. So we use intoxicants to take us away from our experience. तो हम नशे का उपयोग इसलिए करते हैं कि हम वो वास्तविक परिस्थितियों से बाहर जाना चाहते हैं या भागना चाहते हैं. So the real question is, तो जो सही सवाल है, can you do without it for a time? क्या आप उसको उस तरीके से नहीं कर सकते हैं? So when we get to go on retreats in person, तो जब हम व्यक्तिगत रूप से शिविरों में जाते हैं, can we turn off our phone for a few days? तो क्या हम कुछ दिन के लिए अपना फोन बंद कर सकते हैं? Or are we addicted? जिसमें हम पूरी तरह से रत हो गए हैं. And on retreat, we can get a taste of clearness. तो फिर शिविरों में हमको एक एहसास होता हमारे उस तरीके की खुलेपन का, of clear and radiant mindfulness. तो वहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो मन है वो बहुत स्पष्ट होता है और थोड़ा सा लुभावना भी होता है. And we can get this in our lives as well. तो इस तरीके का अनुभव अपने जीवन में हम ले सकते हैं by trying not to be so caught up in things all the time. तो अपने आप को इन सारी चीजों में जकड़ने से मुक्त कर सकते हैं. Not taking intoxicants. हम किसी भी तरीके से नशे में रत नहीं रह सकते. And we will be much happier then. और फिर हम देखेंगे कि हम बहुत उसके वजह से आनंदित हैं. Okay, so that is perfect action. तो ये हो गया सम्यक कर्मान. And we want to act with as much of ourselves as possible, bring ethics, act as ethically as we can. तो हमको कोशिश ये करते रहना है कि जितना हो सके मेरी जो कृतियां है वो परिपूर्ण या सम्यक हो और मैं उसका आचरण करूं. With as much of us as we can. जितना ज्यादा हो सके उतना हमें करना चाहिए. We can be ethical in one place but not ethical in another place. तो हम एक आधी जगह पर नैतिकता का आचरण कर सकते हैं मगर शायद दूसरी जगह नहीं कर सकते. We can be ethical in the sangha. हम संघ में नीतिमत्ता का आचरण कर सकते हैं. And then shout at our family. और फिर घर आने के बाद में हम अपने परिवार पर गुस्सा निकाल सकते हैं. So we're trying to be ethical everywhere we go. तो हमको कोशिश ये करना है कि मैं हर जगह नैतिकता के साथ में आचरण करूं. More and more fully. और जितना हो सके उतना पूर्णत्व की तरफ जाना चाहिए. Okay, so lastly, perfect livelihood. तो आखिरी में सम्यक आजीविका को देखते हैं. So in his lecture, Bhante Sangharakshita talks. तो भंते संगरक्षी जी इस प्रवचन में
बताते हैं about perfect livelihood as the transformation of society. और सम्यक आजीविका के बारे में कहते हैं कि ये संपूर्ण समाज का परिवर्तन करती है In line with the Dharma, in line with the Dhamma. और धम्म के माध्यम से करती है And he gives the example of Emperor Ashoka, और वो उदाहरण देते हैं राजा अशोक का who converted to Buddhism and led India to the Dhamma. तो वो बुद्धिस्ट बनते हैं और उसके बाद में पूरे भारत में अपने धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं And it's a very inspiring story. और वो अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायी ऐसी एक उदाहरण है कहानी So we need to change society, as Dr. Ambedkar emphasized. तो हमको भी समाज में परिवर्तन लाना है जैसे बाबा साहब ने बताया है And our work is one of the main ways we interact with society. और हमारा जो काम है उस काम के माध्यम से हम समाज में अपना आदान प्रदान करते हैं So we need to try and make that as ethical as possible, as right as possible. तो हमने जितना ज्यादा हो सके नैतिकता का आचरण करके हमने व्यवहार करना चाहिए We spend so much time working if we're working. हम हमारा काम करते हुए बहुत सारा समय बिताते हैं And what kind of effect does that have on us? तो उस बात का कितना असर हमारे मन पर होता है And what kind of effect does that have on the people around us? और फिर जो हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं उन पर क्या प्रभाव होता है So we need to look at how we make a living, how we work. तो हमने अपना जीवन यापन कैसा करना चाहिए Now, I realize it's very different in the West to India. मैं जानता हूं कि जो भारत और पश्चिम में बहुत फर्क है By and large, in the West, we have a lot more options. पश्चिम में बहुत सारे हमारे अलग अलग सुविधाएं हैं So I often say to people, maybe you need to change your job to be more ethical. तो मैं बहुत बार लोगों को ये कहता हूं कि आपको नैतिकता का आचरण करने के लिए आपके जो काम करते हैं उसको बदलो Rather than work in a job that's unethical. बशर्ते कि हम जो अनैतिक है उस काम को छोड़ के अच्छा काम करें I realize in India it's not that simple. मगर मैंने भारत में अनुभव लिया कि ऐसा आसान नहीं है But if our job is not ethical and we can change to an ethical job, I would encourage you to do that. मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर ये मुश्किल है ऐसा करना और आपका जीवन आप अच्छा जीना चाहते हैं तो मैं आपको ये निश्चित ही कहना चाहूंगा कि आपका कार्य बदलो But if we can't change our job, then at least we can try and be more ethical. मगर आप नहीं कर सके तो कोशिश ये करिए कि आप कितने नैतिकता से आचरण कर सकते हैं Making our own behavior in there more skillful. आपका स्वयं का जो आचरण है वो बहुत ही नैतिकता के आधार पे आप जिए Watch out for the effect that all our work has on our minds and hearts. तो जो भी कार्य करते हैं उसको ध्यान से देखिए कि क्या आपके मन पटल पर उसका कैसा असर हो रहा है Does it leave us too tired to practice Dhamma? तो क्या आपको ऐसा आचरण करने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है To practice meditation? क्या आप ध्यान साधना करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं Does it leave us very stressed? क्या आपको तनाव उत्पन्न हो रहा है आप में And what can we do about that? और फिर हमने क्या करना चाहिए उसके बारे में Maybe we need, if we're being stressed, maybe we need to meditate more. अगर हम बहुत तनाव में होते हैं तो हमको बहुत ध्यान करना जरूरी है So that we can stay calmer in the job. तो फिर हम अपने काम में थोड़े से शांत रह सकते हैं So Ante talks about different types of work. तो बंदे जी कई कामों के बारे में बताते हैं And he says the best kind of work is where we can work directly for the Dhamma. और वो इन कामों में से एक काम बताते हैं कि धम्म के लिए सीधे काम करना ये बहुत ही अच्छा काम है But not everyone can do that. मगर सारे नहीं कर सकते हैं Dhamma work doesn't pay very well. क्योंकि धम्म वर्क से हमको बहुत ज्यादा आमदनी नहीं होती है It pays very well spiritually, but not materially. ये हमको आध्यात्मिक रूप से बहुत अच्छा रखते हैं पर
जो भौतिक जीवन में अच्छा नहीं बरतते हैं। But if we can find some kind of work that is vocation, मगर जैसे कि हम किसी व्यवसाय को ढूंढते हैं, पेशे को ढूंढते हैं, where our work agrees with what's most important in our life, तो फिर हम देख सकते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण कार्य मेरे अपने जीवन के लिए, that is really good. और वो बहुत अच्छा है। But really, it's about trying to live skillfully. मगर महत्वपूर्ण बात है कि आप अपना जो जीवन है वो बहुत अच्छा जिए, कुशलता से जिए। Trying not to cause harm कोशिश करिए कि उससे किसी को तकलीफ ना हो, as we work. जो हम करना चाहते हैं, जो काम करते हैं। Okay, so there's lots more that could be said, तो उसके बारे में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, but I think I'll finish up there. मगर मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। So we've covered perfect speech, तो हमने सम्यक वाणी को देखा है, looking at the different levels of perfect speech, हमने वाणी के अलग अलग स्तर देखे हैं, of truthfulness and affectionateness, हमने सत्यवाणी देखे हैं, मृदुवाणी देखे हैं, of helpfulness and of silence. अर्थपूर्ण देखे और मौन को देखे हैं। We've looked at perfect action or perfect ethics, हमने सम्यक कर्मांग को देखे, सम्यक नैतिकता को देखे, and looked at the 5 silas for guidelines from the Buddha. और हमने जो बुद्ध ने मार्गदर्शन करी हुई जो शिक्षा है उसको पंचशील के रूप में देखा है। And we've looked at perfect livelihood, how we interact with society in our work. और साथ ही हमने सम्यक आजीविका को भी देखा, जिससे कि हम समाज में कैसे हमारा अभिसरण होगा। So that's all I'll say for now. तो मैं उतना आज इस अवसर पर कहना चाहूंगा, I'm very happy to take questions. और मैं बहुत खुशी से आपके सवाल को सुनना चाहूंगा। And a very big thank you to Nagamitra for translating. धन्यवाद। Thank you very much for you to be the part of this lecture series. तो भाई और बहनों, आपका समय आता है अब सवाल पूछने का, तो आप अपने सवालों को पूछिए। Thank you, Ravi. कौन है हाथ ऊपर किया अभी? कौन है? रवि जी पूछिए। मैं पानी लेके आता हूँ, आप मेरा आसान काम कर देते। सम्यक जी पूछ रहे हैं सवाल। मेरे ख्याल से कौन सम्यक पूछ रहे कि रवि पूछ रहे पहले? सम्यक को मैं ओपन किया। सम्यक पूछिए और ट्रांसलेट भी करिए। मैं पानी लेके आता हूँ मेरे लिए। हाँ। थैंक यू। Hello? Hello. Can you hear me? Yes. Yes. It's good evening from India. Good evening. Yes. What about in your country? It is lunchtime. 2 o'clock. 2 It's o'clock. 5.5 hour difference, no? 5.5 hour of difference. Yeah. Mm-hmm. Oh, okay. Your speech was so wonderful. You touch about 3 different distinct things: perfect speech, perfect action, and perfect livelihood. Well, there are many questions to be asked, but I'll ask only 2 questions, which will be very useful for me. In fact, first thing is about you were talking about in perfect action. You were talking about Kavesum Ichchachara Veramani Sikkapadam Samadhyami, perfect livelihood, not indulging in sexual activities. I'm talking about this. So you were talking that you should be ethical, right? But now, these days, you might be knowing, and every world is knowing, that we are in living relationship.
So is it acceptable for Buddhism to live in living relationship? And secondly, if both the partners are ready by mind, then is it okay in Buddhism? This is one question. Second question is about um, you are a big user of YouTube, right? I've seen your most of this YouTube reflections, thoughts of the day, reflection for the summer, doing something that works in meditation, vision and transformation, and also you have given a good message for Happy New Year. Yes. Do meditation. Yes. So I'm also a very good, very huge fan of using YouTube. Now Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, and ways this Tumblr also. These are all social networking sites. You have touched this with using mobile. It is an addiction, you say. Now, to preserve our Buddhism, whether YouTube is okay to learn about Buddhism, YouTube is okay. And what is the other option for you, YouTube? Great, thank Substitute you. for YouTube. Yes. Yeah. मैंने इनको पूछा है, दो प्रश्न इनको पूछा है. पहला प्रश्न ये जो है कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, ये मैंने बोला है उनको. और आज का जो दौर है लिविंग रिलेशनशिप का है, तो ये बुद्धिज्म में मान्य है या नहीं, ये पूछा है. और अगर मन से दोनों भी पति पत्नी या दोनों भी योग युक्ति तैयार है, तो क्या वो बुद्धिज्म के इसमें आता है ये. और दूसरा जो प्रश्न मैंने पूछा है ये इसके बारे में है कि अगर आप यूट्यूब देखते हो तो ये बराबर है या नहीं, और उसका पर्याय क्या हो सकता है. धम्म टिकने के यूट्यूब बराबर है या नहीं, या इसके बारे में पूछा है. थैंक यू वेरी मच. Great, thank you, Ravi. So Ravi is a Samyak. His name is a Samyak. Ravi is waiting. Sorry? The person who asked, his name is a Samyak. Oh, I'm sorry, not Ravi. Sorry, Samyak. Ravi is on waiting list. Yeah. Thank you, Samyak. And Samyak has been watching the Dublin Buddhist Centre videos, which is really great. तो Samyak Dublin Buddhist Center के जो वीडियोस है वो देख रहे हो, बड़ी अच्छी बात है. So I'll answer the second question first. तो मैं आपके दूसरे सवाल का पहले वो जवाब देना चाहूँगा. I think we have to reach people. We have to reach people with the Dhamma. मेरे ख्याल से हमने लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों के पास में धम्म लेकर जाना चाहिए. And here in Ireland, we're in lockdown. और आयरलैंड में हम पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुके हैं. So we have to use YouTube, we have to use Facebook, we have to use Instagram. तो हमको ये सारे YouTube, Instagram, ये सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करना जरूरी है, Facebook इस्तेमाल करना जरूरी है. And we've reached hundreds more people online than we could in person. और व्यक्तिगत रूप से जितने लोगों के साथ संपर्क नहीं साध सकते उतना इस माध्यम से हम कर पा रहे हैं. So here in this room we could only fit 20 people. तो इस कमरे में जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ 20 लोग ही बैठ सकते हैं. On our course on Tuesday night we had 90 people. और जो मंगलवार को हमारा एक धम्म की संध्या होती है उसमें 90 लोग होते हैं. And we have 5 or 6 courses a week with lots of people. और हमारे पास में सप्ताह में 5 क्लास होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं. So we need to use YouTube and we reach many more people with that. तो हमको YouTube इस्तेमाल करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत लोगों तक पहुंचना है. Or Zoom. या फिर Zoom. And so we can use these things, but we try not to get addicted to them. तो हमने इसका इस्तेमाल करना चाहिए मगर इसके शिकार नहीं बनना चाहिए. We're much less likely to get addicted to Dhamma on YouTube. तो ये बड़ा आसान है कि हम भी इसके एक तरीके से शिकार बन जाएं, इसके आदी हो जाएं. Than watching cat videos. और फिर हम दूसरे कुछ वीडियो को देखें. So watching Dhamma on YouTube is good. तो धम्म सुनना और देखना YouTube पे ठीक है. And we're going to be in lockdown until September. और हमारा जो लॉकडाउन होगा वो सितंबर तक होगा. Or at least all our classes are going to be online here till September.
या फिर हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस है वो आने वाले सितंबर तक होंगे. And that's just how things are. और इस तरीके की चीजें हैं. So keep using YouTube for that. तो आप कृपया YouTube को देखते रहिए. So for the first question, Nagamitra, could you just is it live in relationships without being married? No, it's not. It is Can you just explain? two person come together and they decided to live together. I'm sorry, say that again. That means that the two people, those who are mature, they decided to live together. Okay, yeah. What was the question? Question of Sambek was: is that accepted in Buddhism or not? Yeah, I think we as long as people are not causing harm and as long as people are clear what is happening, then it's okay. अगर लोग आपस में आनंदित रहते, खुश रहते हैं तो ठीक है, और वो प्रति दूसरों को तकलीफ नहीं देती है तो ठीक है. As long as both people are signed up and it's all clear. अगर दोनों एक दूसरे के साथ में रजामंद होते हैं तो ठीक है. Then it's okay, and as long as there's no exploitation. और साथ ही साथ वहाँ किसी भी प्रकार की कोई किसी को पीड़ा देने वाली या उनको तकलीफ देने वाली बात ना हो तो ठीक है. So I would say there's nothing wrong, but as long as people are being ethical. तो जब तक वो नैतिकता से आचरण नहीं करते हैं तो वो अगर नैतिकता से आचरण करते हैं तो ठीक है. So Ireland is a very traditional country. आयरलैंड बहुत ही पारंपरिक देश है. So traditionally you would have to be married before living together. तो हमारे यहाँ मतलब आपको शादी के बाद ही एक साथ रह सकते हो. But that's all changing now, and people don't feel like they need to be married. और अभी वो बातें बदल रही है. अब लोग मतलब ये समझिए कि लोग अपने तरीके से जीना शुरू कर रहे हैं. And that has advantages and disadvantages. और उसके फायदे भी है और नुकसान भी है. But as long as people are being kind and aware, it's okay, I think. मगर लोग एक दूसरे के साथ में अच्छा बर्ताव करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो ठीक है. I hope that I'm not being too controversial. हो सकता है कि जो मैंने बोला ये बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला ना हो, विरोधाभासी ना हो. And Nagamitra, you tell me if I'm missing anything. No, it's all right. Thank you. So अगला सवाल रवि है. रवि रवि को अनम्यूट किया क्या? Oh yeah. Thank you, Samyak. Thank you so much, Vajrashura, for another excellent discourse on this topic. I wanted to go a little deeper. I mean, it's a little non-conventional. My question may put many people at little unrest today. I want to go a little deeper into the matter. Like I believe that the way you described Ireland culture, the Indian culture is also same, that unless you are married, you are not supposed to be staying together. That's the part of the culture over here, societal norms. Yeah. Now, when we talk about moral principles, the moral principles are not sacrosanct. They change from place to place, the culture to culture. That's one way of looking. I mean, and that's how there is no standard morality, particularly societal morality. However, when we talk about not living relationship, but relationships between two people, particularly between married people with consent, whom believe that they are in love and they are into a kind of extramarital relationship. Now, if we look at people's perspective, they may feel that their behavior is ethical. However, from Buddhist perspective, from the
perspective of whether this kind of behavior is coming out of greed or raga, dvesha, and what moha we call it in Buddhism. What is your opinion on this? Is it ethical? Is it unethical? Or is it a societally differentiated ethical or unethical? Do you want to say that in Hindi? Oh, sorry. Yes. थैंक यू सो मच वज्रशुरा जी, और एक बहुत ही खूबसूरत आपने प्रवचन दिया है आज। मेरा जो सवाल है इससे थोड़ा सा आगे जाके है, और हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ी सी मतलब सवाल सुन के थोड़ी तकलीफ भी हो। मैं आपने जिस तरह से आयरलैंड का एक संस्कृति बताई और भारत की जो संस्कृति है, दोनों संस्कृति में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है, साम्यता है। इस तरह की साम्यता है कि हम दोनों संस्कृति में शादी के बाद ही एक दूसरे के साथ रहना समाज मान्य करता है। तो ये समाज कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम एक इथिकलिटी की जब बात कर रहे हैं या नैतिकता की, तो नैतिकता समाज से एक समाज से दूसरे समाज में बदल जाती है, क्योंकि समाज की नैतिकता की आधार कुछ अलग होते हैं। तो अभी जब आयरलैंड और भारत जैसे देशों में जहाँ पे शादी के पहले हम रह नहीं सकते, तो ऐसे देशों में भी आजकल बहुत सारे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखते हैं, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, एक दूसरे के सम्मति से एक दूसरे के साथ संबंध रखना चाहते हैं, और उनको उसमें कोई भी गलत नहीं लगता है। उनको लगता है कि ये जो है ये उनका एक दूसरे के साथ संबंध रहना ये बहुत ही मतलब उनको नॉर्मल लगता है उनके पर्सपेक्टिव से। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से, एक बुद्धिस्ट नीतिमत्ता के आधार पे ये नीतिमत्ता जो है वो मान्य है, या ये नीतिमत्ता को हमने अनस्किलफुल समझ लेना चाहिए या स्किलफुल समझ लेना चाहिए? थैंक यू। Great. Okay. So I have a few thoughts on this. मेरे पास में कुछ बातें हैं, but it's a very complex area, मगर ये बहुत जटिल एरिया है, and very difficult to make general statements on. और इस पर बहुत ही ऐसे ही कोई अपना उत्तर देना उतना सही नहीं है। So in principle there might be nothing ethically wrong, हो सकता है कि आप तत्वतः कुछ गलत नहीं हो with for example extramarital behavior if everyone is agreed. रवि ये क्या बोले? अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर सबको मंजूर है तो उसमें कोई कोई ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। But in practice it never really works out like that. मगर वास्तविक रूप से ऐसा कोई आचरण नहीं होता है। There's a lot of emotion involved in this area. क्योंकि बहुत सारी भावनाएं इसमें जुड़ी होती है। There's a lot of attachment and a lot of craving. क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, बहुत तृष्णा होती है। And I've rarely seen it work well. Never seen it work well. और मैंने कभी नहीं देखा कि ये बहुत सही ढंग से आगे बढ़ते हैं। And in the West, I've seen friends in very complex situations when it comes to sex and marriage and romance. और मैंने मेरे दोस्तों को बहुत तकलीफों में देखा है जब वो शादी या फिर किसी प्रकार के लैंगिक व्यवहारों में जब जाते तब। And generally, the more complex it is, the more wrong it goes. और जब ये गलत होता है तो और ये जटिल होता है। So I think it's not just for us as Dhamma practitioners. तो ये केवल धम्माचरण करने वालों के लिए ही गलत होता है ऐसा नहीं है। Like with all the precepts, like with all the silas, जैसे कि सारे शीलों के साथ में इसको देखें, it's not enough just to avoid being unethical. तो ये केवल इतना ही नहीं कि आप अपने आप को अनैतिक का आचरण से दूर रखें। We need the positive aspect of the sila as well.
मगर हमको जो शीलों का विधायक अंग है उसको भी विकसित करना जरूरी है. So here we need to be actively moving towards stillness, simplicity, contentment. तो यहाँ का महत्वपूर्ण बात यह है कि आप संतुष्टि और सादगी का आचरण करते हैं. So I don't think that relationships that involve extramarital affairs is easily moving towards that. तो ये बाह्यातकारी जो शादी के बाह्यातकारी जो संबंध रखते हैं उसके लिए बहुत आसान होता है. So that's all I'll say. Without knowing individuals, I cannot say more. तो बगैर किसी व्यक्तिगत जीवनी को जाने मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ. Just to speak for myself. तो मैं अपने बारे में अगर कहूँ. So my partner is a Dharmacharini. तो मेरी जो मित्र है वो धर्मचारिणी है. I live in a men's community. She lives in a women's community. मैं मनुष्यों के कुल में रहता हूँ, वो स्त्रियों के कुल में रहती है. We visit each other. हम एक दूसरे को मिलते हैं. It is a sexual relationship. तो हमारी लैंगिक संबंध है. It's not conventional in the sense of marriage. We're not married. तो हम जो सामाजिक नीतिमत्ता के दृष्टिकोण से शादीशुदा नहीं है. But we have been together for 13 years. मगर हम लगभग 13 सालों से इकट्ठा हैं. And we feel committed to each other for the rest of our lives. और हम सारे जीवन भर इस तरीके से एक दूसरे के साथ में प्रतिज्ञाबद्ध हैं. And it feels very ethical, even though it's not conventional. और हम बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति नैतिक महसूस करते हैं, बशर्ते कि ये सामाजिक नीतिमत्ता में नहीं आता है. So I hope that isn't too shocking. तो ये आपके लिए कोई धक्का देने वाली बात नहीं है. Not at all. Yeah, but to come back to your original question, Ravi. तो आपके जो सवाल है उस पर अगर देखें. It is very complex, but I would always aim to what's most simple. ये बहुत ही जटिल है, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि इसको सरलता से देखा जाए. And I've rarely seen very complex relationships like that work. और मैंने देखा कि वो जो ऐसा करते हैं उनकी जो जीवनी है बड़ी तकलीफों में देखा है. Or work in a way that supports Dhamma practice. और कई बार ये धम्म आचरण के लिए भी एक पेचीदगी निर्माण करती है. Over a longer time. और ये बहुत लंबे समय तक ऐसा होता है. I will need to go in a minute, Nagamitra. Sure. Thank you. So tomorrow I will speak about perfect effort, perfect awareness, and perfect samadhi. तो कल हम लोग सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के बारे में देखेंगे. So I hope to see you there. तो कल हम फिर मिलेंगे. So thank you, Vajrasura. Thank you so much. You are a very fast trainer. You are training in a 1 hour, 3 aspect of the Noble Eightfold Path. So thank you so much. I hope it's not too much. I wanted to go for 8 days actually. Each Next time. Name should be like every day. But anyway, it's your time. So hopefully I will catch you for the next another subject and we'll go for that. Thank you so much. See you tomorrow, Jai Bim. Have a lunch. Thank Good you. lunch. Have a nice evening. Thank you. Thank you, Vajrasura. Thank you. तो भाई और बहनों बहुत बहुत धन्यवाद रवि का, सम्यक जी का, जिन्होंने बहुत अच्छे सवाल पूछे और हमको एंगेज रखा और अपने को भी ज्ञानी बनाया उसके लिए. सम्यक जी कहाँ चले गए क्या? तो रवि जी को कुछ कहना है तो रवि अपना हाथ ऊपर करे हुए है. तो हाँ, रवि बोल जी को सकते हो, सुनते उनका हैं. माइक चालू ही है. जी उनको मालूम है. नागमित्र जी, मैंने ये इसलिए पूछा था कि अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, इसको एक्सप्लेन करते वक्त किसी भिक्खु ने बुद्धा को ये सवाल पूछा था तब, और इसका जो वर्णन है ये धम्मपदा में मैंने कहीं पढ़ा था. तो वो सवाल पूछने के बाद मुझे एकदम याद आया, तो मैंने इमीडिएटली उसको देख लिया कि क्या है.
और जिस मतलब मैं जिस तरह का देखो, दो लोग मतलब एक दूसरे के लिए कमिटेड है वो अलग है। दो लोग